Good morning to all. Last time we had completed a natural sector and many animals live in a natural sector. Now our today's new topic is the man-made sector. Okay? Because some of the animals are not living. Some of the animals are not living in a natural sector. Domestic animals are generally kept in a man-made shelter, means made by man. Like we talked about of dog, live in a kennel. So these animals also help in a different task and turn we provide a food, shelter and care to these animals. Because we can talk about a dog. The dog helps to us as well as पुलिस टू कैच द थीव्स, चोर को पकड़ने में और क्रिमिनल को पकड़ने में हेल्प करता है. एंड डॉग ऑल्सो गार्ड्स अवर हाउस व्हेन सम अननोन पर्सन ट्राई टू एंटर इन अवर सोसाइटी और एट अवर होम, सो इट कैन डॉग स्टार्ट barking. Okay, so we can easily get the idea that maybe someone is entering our society. That way they can help. Cow, buffalo give us milk and they are domesticating animals. Sheep gives us wool. So these all domesticating animals are living in a man-made state. This animal help us in a different task. ओके जैसे मैंने आपको टास्क मीन्स अलग अलग एनिमल का अलग अलग काम है, वो हमको हेल्प करते हैं. शीप गिव्स अस वूल, काउ एंड बफेलो गिव्स अस मिल्क, डॉग हेल्प अस टू कैच द थीव्स एंड क्रिमिनल. दैट एंड टर्न वी प्रोवाइड एंड दैट इज व्हाई इट इज आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोवाइड द फूड बिकॉज़ दे आर फेथफुल टुवर्ड्स अस. वो हमारी रक्षा करते हैं, समटाइम्स आर मोस्ट हेल्पफुल दे आर टू अस. सो it is our moral duty to provide food, shelter and care to these animals. Horses are kept in a stable and sheep and goat are kept in a pens. Okay, where they are live, sheep and goat live in a pen, horses are live in a stable and dogs are kept in a kennels. These all homes are made by men. So underline the spelling of KENNELS, kennels. Okay, only one spelling in this paragraph. Next, here we have to see a true or false. Chalo. Tigers, lion, bears live in a caves. That is true. Arboreal animals are those that live in waterfalls. They are live on trees. Anthill is made of hard mud. True. Moles live in shallow. Moles live in hollow trees. False. Okay. होलो मीन्स जो ट्री की ब्रांचेस वो अंदर से होलो है. ओके, दैट इज कॉल्ड होलो ट्रीज, बट इट्स अ फॉल्स. मॉल्स नॉट लिव इन अ होलो ट्रीज. चलो, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, एनिमल दैट लिव इन अ ग्रुप. अभी हमने नेचर शेल्टर पढ़ा. ओके, बट व्हिच एनिमल्स आर लिव इन अ ग्रुप दैट वी कैन लर्न. चलो, many animals like ant, bees and elephants usually stay in a group. हमने देखा है कि जब ant walk करती है, okay, when we have to see the ant nearby a ant hill, so many ants are walking in a lines, in a group. आपको कभी एक चींटी दिखने नहीं मिलेगा, एक ant दिखने नहीं मिलेगा. Okay, they walk and go for all the works like collecting food. Okay, making a chamber, repairing a chamber. They are work in a group. That is why they are called worker ants. Living in a group keep them safe if it is safer from them to move one place to
another place. जैसे हम कहीं अकेले नहीं जाते, we have to search out the group of our friends, our relatives, our parents, okay, our brother and sister. So somewhere in unknown place, always we have to go in a group. So someone try to help if we are suffering from some major problem. Ant and bees live in a group called colonies. Underline the spelling of colonies because they always live in a group. An ant colony consists of one or several queen ants. An ant colony. Colony means जैसे लायन डेन में रहता है तो लायन का होम्स को हम डेन बोलते हैं. डॉग लिव इन अ कैनाल, सो द होम्स ऑफ डॉग इज कैनाल. सो सेम ओवर हियर, ant and bees live in a group called colonies. उसका ग्रुप का, जैसे हमारा ग्रुप है तो we can know this is our friends group. Okay, so same over here, they are living in a group called colonies. Okay, and colonies means consist, एक साथ वो लोग रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, that is called colony. And it consists of one or more several queen ants. Means queen ants because always queen ants lay egg. Okay, and worker ant repair the chamber. So here all the ants live together. Okay, but their works are separately. तो उसमें से जो queen ant है, one or several queen ant. Queen ant lay egg and the other ant are work. Ants are the worker ant work for their colonies. Colonies में अगर कोई एक group है ant का, okay, if they are having some problem, the water is filled in their canal, so they can try to repairing, they can help. But जो queen ant है वो female ant है and lay egg. A group of bees is called SWARM, swarm. What it is called? SWARM, swarm. चलो, so underline the spelling. Group जैसे ग्रेप होती है तो ग्रेप का एक के साथ ज्यादा ग्रेप होती है तो we call it a bunch of grape, a bunch of keys. Okay, so same over here, a group of bees is called swarm. A bee's colony has one queen. A bee colony has one queen. Bee means honey bee. We talk about the honey bee. Okay, उनको एक मेन क्वीन होती है, जैसे हमारे घर पे कैसे ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर मेन मेंबर है, ऐसे उनमें जो बी कॉलोनी है सो वन क्वीन बी. सम ड्रोन्स मेल बीज. ओके, सम ड्रोन्स DRONES male bees and many female worker bees. Drones protect the hive. Drones means जो मेन क्वीन होती है, मेन बीस होती है. ओके, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जो हाइव बनाया है, मधुपुड़ा बनाया है, वो कोई गिरा न दे. इट कैन नॉट बी ब्रोक डाउन टिल द नेक्चर इज फिल्ड इन अ होल बी हाइव्स. सो दैट इज कॉल्ड ड्रोन. इसको क्या बोलते हैं, मेल बीस. व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ड्रोन्स, मेल बीस. ओके, एंड जो फीमेल बीस होती है उसका नाम क्या है, क्वीन बीस. चलो, सो ड्रोन्स और मेल बीस बोथ आर सेम. दे आल्सो कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स. ओके, ड्रोन्स मेल का काम क्या है, मेल बीस का काम क्या है, मींस ड्रोन्स बीस का काम क्या है, कलेक्ट द नेक्टर. जो स्वीट और जूसी लिक्विड है उसको फ्लावर में से सर्व करती है और बी हिव्स में लाके वो लीव करती है. इट्स अ फंक्शन ऑफ ड्रोन बीस और अ मेल बीस. बोथ आर सेम मीनिंग. ओके, और क्वीन बीस ले एग. और वर्कर बीस क्या करती है, वर्कर बीस लुक आफ्टर द क्वीन एंड द यंग वंस. व्हेन अ क्वीन बीस lay the egg in the bee hives. Okay, so the worker bees protect them, their eggs which are lay by the queen and otherwise queen bees. They do all the work together.
स्मॉल फिश स्टे क्लोज टुगेदर। जो अभी हम फिश की बात करेंगे। चलो, here we can talk about a small fish. Small fish stay close together because when the big fishes are lay eggs, so a number of eggs are released from the female fishes, and their eggs are not enough mature, still that they have to stay together. एक साथ रहते हैं in a large group called schools. SCHOOLS, schools. Not आपकी स्कूल नहीं है, ओके? schools उसका ग्रुप का नाम है। और SHOAL, SOLS, schools और SOLS दो मीनिंग है। ये ग्रुप का नाम है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। This help them to stay protected from being eaten by a large fish, because the small fish are not able to swim instantly when they born, and till that they have lived together, so the big fishes help them to stay protected from being eaten by a large fish. Large fish वो एग को खा नहीं जाए, ओके, उसको डैमेज नहीं करे, till that they live in a group, help them to protect against a large fishes, because sometimes large fishes अपने ही एग को खा जाती है, ओके? चलो, a groups of elephant is called HERD, herd. What it is called? herd. जो ग्रुप में रहते हैं that is called, हम पीपल एक साथ होते हैं तो क्या बोलते हैं? क्राउड ऑफ पीपल बोलते हैं ना, क्राउड ऑफ पीपल, ओके, पब्लिक का टोला बोलते हैं हम इसको। सेम ओवर हियर, अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट इज कॉल्ड herd. Elephant live in an open space because elephant some type of living in a forest also, and 5 to 6 animals are go in a forest for grazing the plants and plants product. वो खाने के लिए जाते हैं तो वो ग्रुप में जाते हैं, and this group is called herd, and they live in a open space. Elephant have a very strong social bond. वो सोशली काम करते हैं, कभी पूजा में आपने देखा होगा, कभी सर्कस में देखा होगा, ओके? चलो, so they live in a family. Social bond means एक दूसरे के साथ उनका combinations अच्छा है, that is called social bond. They live in a family group or herd, headed by a female elephant. जो female elephant है, they can give the birth to their young ones, that is called headed. Female elephant is called cow. What it is called? cow means उसका young ones का नाम है cow. cow means जो animals cow है not, the young one of female elephant is called calf भी बोलते हैं और cow भी बोलते हैं. A male elephant is known as bull, okay, bull. They cannot give birth. They live in the herd till they are 14 to 15 years old. जब तक एलिफेंट ग्रुप में रहते हैं, जब तक young one animals cannot started activity like walking and like grazing in a forest. वो जंगल में खाने के लिए जाते हैं तो उनके जो young ones है, उनका जो बच्चा है उसको वो अकेले नहीं छोड़ता है. All the young ones are walk in a group. Elephants are sensitive. Underline the spelling of sensitive means kind. दया होती है उनको, ओके, एक दूसरे के प्रति, that is called sensitive to a fellow animals and baby elephants. उनके ग्रुप में जो दूसरे एनिमल्स है, that is called fellow animals, okay, and another animals. Till that young one is do not enough mature and do all the activity by themselves, till they can take care and sensitive towards them. The baby animals they have to keep. If baby elephants
चलो, elephants, if a baby elephant express DISSA, dissatisfaction, okay, underline the spelling of dissatisfaction. If baby elephant is express a dissatisfaction, means a male animal or female animals, means our parents of elephants are aware about of their young ones are there in some problem. Okay, तो express, maybe they are not feeling well, खाना नहीं खाया है, maybe they are suffering from some disease, so they express, their body are express a dissatisfaction. The entire family here, the entire family goes over to comfort it. ओके, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग, हेल्प करने के लिए वो लोग जाते हैं. इसके पास बेबी एनिमल्स, ओके, यंग वंस एनिमल्स आर एक्सप्रेस देमसेल्फ अ डिस्कम्फर्ट, मे बी some problems are arise with them, and that is why they help to the young ones if they are not well. Okay, and goes over to comfort it. तो दूसरे ग्रुप एलिफेंट्स का जो हर्ड होता है, टोला होता है, वो लोग उनको हेल्प के लिए उनके पास जाते हैं. ओके,